if we have defined limit of a function, what we need, first we need a function, and we need a point where we have to check does its limit exists or not. Say suppose this point is A, this is a point where we have to check its limit exists or not. And when we and another real number is L, this is any real number, we say that this L is called the limit of f of x 8x is equal to A if, उसके लिए क्या condition, if for given epsilon. So what it means that epsilon is up to v people, but we have to choose in such a way that epsilon must be greater than 0, but it must be the smallest positive integer. So just to take an example of weight of polythene, weight of a single polythene. If for epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0. It means that if you have given epsilon, then you can find out delta greater than 0 such that the property is this: modulus difference of f of x minus L is less than epsilon whenever x minus A is less than delta. What is its mean? It means that you have x-axis, you have y-axis, and you have any function. This is the graph of that function, and you choose any point on the domain axis. Say suppose this is a point, and you wanted to check that whether this function has a limit at this point or not. Say suppose you are targeting that its limit is L. So its limit, that means its output. So limit must is there. So say suppose the function f of x has limit L. जब मैंने a सब्स्टिट्यूट किया इसमें, इस फंक्शन का इस पॉइंट पे लिमिट क्या आ रहा है? L. So what does this mean? It means that you have to take the neighborhood of L, that means L plus epsilon, L plus epsilon and L minus epsilon, and you have, if this is given, then you can find out the corresponding interval on the domain axis, that's A plus delta, A minus delta. It means that if you choose any input between A minus delta and A plus delta, you will always get output in this interval. So this is called epsilon delta definition of a limit in single variable. But your topic is limit of a function, limit of a function, limit of a function on several variables. Several variables. So what you have, you must have we are taking only two variables, not more than two. You have a function in two variables, and you have to claim its limit is L, at which point, because this is function of two variables, it means that you are now in two dimensions. So you have to choose, you have to take an ordered pair. At this point, you have to check the function has, this function has limit L. So how can you check? Its SOPs are, what is its SOPs are? Modulus difference of f of x comma y minus this L must be remain less than epsilon whenever modulus difference of x minus A is less than delta. This must be greater than 0, and 0 greater than y minus b. This must be less than. If this condition follows, then you can say that this function has limit. But in this case, you have only two directions.
right hand limit या left hand limit. If right hand limit is equal to left hand limit, then you are saying that the function is the limit of a function exists at x is equal to a. If this holds, left hand limit is equal to, but it has only two directions. Here now you are in 2D. You have two dimensions. This is the point. At this point, you have to check whether this function has a limit or not at this point. So what we can take, we take an open disk around that. If we choose any input between, this is here A, this is here B, this is A minus delta, this is A plus delta, this is B plus delta, and this is B minus delta. If we choose any input between this interval and this interval, the output must always lies in this disk. If this exists, if it is possible, then what we can say that the limit of a function exists. But how can we check its limit exists or not? At this point, we can approach through infinite many ways, like the through straight line, like that. There are infinite straight lines which passes through the point. So it means that there are infinite many ways through which we can approach towards that point. But it is not possible only through the straight lines, but there is also possible like that we can approach towards it along the parabola. We can also approach towards it along the circle. So that's why in this case, if we have to check the limit of a function exists or not, we have to take different paths. Means we have to go along the straight line, we have to go along the parabola, we have to go along the circle. X is equal to r cos theta, y is equal to r sine theta. If along straight line, along parabola, along the circle, if all the paths gives the same value, then we can say that the limit of that function exists. जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए हैं, 2-4 एग्जाम्पल्स आई थिंक दैट यस्टरडेज लेक्चर में हमने किया, बट अल्टीमेटली मैंने रिकॉर्डिंग रखी है लेकिन वो नहीं हो पाया. आई डोंट नो व्हाई. आज भी मैंने रिकॉर्डिंग रखी है कि रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग इज ऑन, बट आई डोंट नो कि लास्ट में होगा कि नहीं होगा. सो मैंने रिकॉर्डिंग रखी है. सो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? Simultaneous limit and iterate limits. Yeah, you can say that repeated limits. Okay, simultaneous limits. This is today's topic. Simultaneous limits. Okay, and or you can say that double limit or double limit, or and हमें क्या डिस्कस करना है आपके साथ? एंड इटरेटेड लिमिट्स, iterated limits और repeated limits. ये मुझे आपके साथ आज के लेक्चर में डिस्कस कर. एंड जब हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद आपको फिर से वही प्रोसीजर करना है अप्लाई जो आपने कल के लेक्चर में अप्लाई किया है. सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है. इफ इज दिस विजिबल? मैंने चेंज किया इंक. इज दिस इज विजिबल और नॉट? सर, if a comma b is the limiting point of a set of values in two-dimensional space, then we have
Then we have the limits. What are the limits? Like that. Limit x comma y approaches to a comma b, f of x comma y, like this, and limit x tends to a, limit x y tends to b, f of x comma y, comma, limit y tends to b, limit x tends to a, f of x comma y. The first type of limit, the first type of limit is known as simultaneous limit. Simultaneous limit. And the last two types, of limits are known as iterated limits. Yeah, repeated limits. So this is the definition. मतलब जो ये वाला लिमिट जो हमने सॉल्व भी किया है प्रीवियसली yesterday's lecture में, जो हमने डिस्कस भी किया है, this is what we call this simultaneous limit. If we calculate limit this in this format, means we are taking the first two, we are approaching y towards the point. After solving, we are approaching x towards the required point. And here we are interchanging the place of limits. We are first approaching x to a, and after that, after solving, you will see in our examples, don't worry. And after that, we are approaching y towards b. So these two limits are called iterated limits, yeah, repeated limits, and this limit is called the simultaneous limit. So now you will clear from the following example. The definition you will clear from the following example. What is the example? Example is this. Now see what's the example. Find the simultaneous limit and repeated limit of the following function. What is the function? F of x comma y is equal to 2xy square divided by x square plus y to the power 4 if x comma y is not equal to 0 comma 0, and it's 0 if x comma y is equal to 0 comma 0. It means that, first thing, this is the point where you have to check whether the simultaneous limit exists and repeated limits exists or not. This is the point. So first we think about simultaneous limit. Bakari repeat to hindi mujib nay candidates se add करते हैं इन mujib कर भी repeat. Go मैं वन गोडनेथी एशियत points इन पे एक disciplining. ठीक है? Because reason क्या है? अशन उनके single variables में क्या? उनके चीज़ double variables. Go उनके चीज़ एक plane represent. Go इसीलिए वंश वनन कुछ how wave वेजो के तरफ हैक बह यथ पॉइंट्स कुन अप्रोच करित
अगर इस रियल लाइन केसस में सनो अस खाली आसान अगर ये पॉइंट्स पे लिमिट चेक कर मगर मान मतलब ये पे बह इनपुट हेका सिलेक्ट कर खाली ये लाइन मीनस बहुत वन बह ये पॉइंट्स कुन अप्रोच कर along this direction या बह अप्रोच दिस पॉइंट्स कुन कर along this direction बस इमे डायरेक्शन पॉसिबल मगर ये वो कथाव कि डायरेक्शनो कि हेक बह ये पॉइंट्स कुन रजू कर कथाव के जरिए हेक बह अप्रोच कर back along this along this along this along this along this मतलब there are infinite ways यम के जरिए अप्रोच हको यानी कि there are infinite paths along which we can approach towards that point मतलब इतु योत कह स्ट्रेट लाइन कह लेकिन बह along the parabola ते ओकन अप्रोच कर like that मतलब इस भी मूवमेंट ये शेपस में बह कोकन अप्रोच कर अथ पॉइंट्स कुन मगर इतु योत कह बह along the circle ते ओकन अप्रोच कर like that समझे मेन कथ so first we find the simultaneous limit solution first we find the simultaneous limit. First we find the simultaneous limit. That means what? This is mean to that we have to find limit x comma y approaches to किस point पे हमें check करना है 0 comma 0 पे 0 comma 0 f of x comma y this is equal to limit x comma y approach to 0 comma 0 and what is the function 2x y square divided by x square plus y raised to power 4 so पहले हमें चेक करना है कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कि नहीं क्या यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं गोडनिच कथ छे यही वुचन कि अस हेको ये क्या सॉल्व कर ना ये पॉसिबल कहीं गोडनेथ क्या सॉरी गोडनिक स्टेप यानी कि x बदल 0 त्रावन y बदल 0 त्रावन ये त्रो 0 ये त्रो 0 ये त्रो 0 गो 0 ये त्रो 0 ये गो 0 by 0 form that's called indeterminate form वो directly हेक न limit apply करित कहीं so what we have to do तेल वुचा बह क्या simplification मा गसस लेकिन simplification is also not possible so what we have to do so we have to go along the different ways along x-axis along y-axis along the straight line but मैंने अल्टरनेटिव मेथड दिखाया हमें क्या करना है हमें जनरली इस पाथ से जाना है टेकिंग y is equal to mx तभी जाके आप ले सकते हो आपको फोकस किस पे करना है क्या डिनोमिनेटर में वेरिएबल खत्म होगा कि नहीं फर्स्ट यू हैव टू चेक क्या डिनोमिनेटर्स में है क्या वेरिएबल गेम वे नियत क्या इसकी सुगोस ना वेल डिफाइंड बन फर्स्ट यू हैव टू चेक अगर इस y बदल त्राओ mx y बदल सु क्या mx4 x स्क्वायर हेकने नीरत कॉमन लेकिन x अत बचो x स्क्वायर डिनोमिनेटर्स नु वो यह हेको न अस नित कैंसल आउट दिस इज नॉट पॉसिबल तेल क्या करो अस तेल हेको अस नित y स्क्वायर इज इक्वल टू m दिस इज पॉसिबल so this is possible ये यानी कि first thing you have to give the focus on गोडनेस कथ से फोकस दिन क्या अगर मैं along this way गोस अगर मैं ये पाथ सिलेक्ट कर क्या अम पाथ अगर भी सब्स्टिट्यूशन गिवन फंक्शन मज करन क्या तम से गसा डिनोमिनेटर्स मज वेरिएबल खत्म कि न कहीं सन कोशिश आसान ये फंक्शन छुन लिमिट एग्जिस्ट गसान डायरेक्टली कहीं अस करान तेल तत लोपिताल्स रूल यानी कि यथ वनान एल हॉस्पिटल्स रूल सह तरह कंटिन्यू तोत ताम युत ताम 0 by 0 फॉर्म खत्म गसान लेकिन यहाँ पे भी आपको वे सिलेक्ट करने लेकिन तिथ पे मैं सिलेक्ट करने सो डैट डिनोमिनेटर्स में गुस वेरिएबल खत्म गसन समझ आवा दिस इज बस ये तो पॉइंट है सीखने के लिए और कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें बाकी तो सिंप्लीफिकेशन समझ आया कि नहीं ओके कम से कम रेस्पॉन्ड दो कोई डाउट है अगर सकते हो हाँ ठीक है श्योर okay if you have any doubt then you can ask
So what Yes. it becomes, let's see. So limit x, y की जगह हमें क्या लेना है? Sorry, हम नहीं लिख सकते y, हाँ? What we can take here? Y square is equal to mx. We have to take y square is equal to mx. So as यहाँ पे आप लिख सकते हो as x approach to 0, where y square approach, it also approach to 0, because हमें x को 0 substitute करना है. येल्त अस कहते substitution करान छ ना, तम विच न पेवा लिमिट ति चेंज करें, लाइक डेट बराबर इतनी लिमिट चेंज करें. ठीक है मीन कर गो ये क्या ये वंकसन ये तेल अंडर रूट ऑफ mx. ठीक है, अंडर रूट ऑफ mx, क्योंकि y से पन वैल्यू m ये को कुछ अप्रोच करान 0 0 क्योंकि x बल x करा अप्रोच 0 ये 0 into क्या सु गए 0. एंड नाउ फंक्शन क्या बनेस 2x y स्क्वायर बदल क्या त्रावन mx डिवाइड बाय शाबाश x स्क्वायर प्लस y raised to power 4, y raised to power 4 हेकिन ते लिखित बराबर ये हेकिन ते लिखित y स्क्वायर होल स्क्वायर. y स्क्वायर त्रों पनन वैल्यू y स्क्वायर कत में बराबर mx गो m स्क्वायर x स्क्वायर हेका बे लिखित किन डाउट छ के? Yes, sir. Whole square. लिख सकते हैं ना ना होल स्क्वायर क्या है थ्रोस ना स्क्वायर y स्क्वायर बदल छ ना वैल्यू त्रावन अच्छा. y स्क्वायर बदल छ वैल्यू त्रावन मतलब ये इस पर लिमिट थे सर ना ये बन लिमिट x अप्रोच टू 0 गो ये सिंगल वेरिएबल्स में नाउ कन्वर्ट ये क्या बन तेल 2mx raised to power 2 डिवाइड बाय क्या बचस x स्क्वायर ने कॉमन अत क्या नीर 1 plus m स्क्वायर. समझ आवा कि ना? समझ आवा? यस सर ये नहीं मो डिनोमिनेटर में क्या नीर कॉमन x स्क्वायर है क्या बचा 1 plus m स्क्वायर. x स्क्वायर तो x स्क्वायर क्या गैस? फुल लिमिट्स ना तो अनसो था अंडर रूट ऑफ mx. No, you go ना सिंगल वेरिएबल्स में कन्वर्ट वही रूना कोई वेरिएबल्स में ऑन द राइट हैंड साइड वही अगर वुचो ये तो दिमो इस नजर एज मतलब अगर वुचो x को कुछ अप्रोच करा जीरोस कुन y ती को कुन करे अप्रोच जीरोस कुन वो लिमिट से तेल अप्लाई करा ये तस में वेरिएबल नजर गस लेकिन ये में छी y वेरिएबल नाउ m छु ना वेरिएबल है m नो किसने कहा है वेरिएबल है m कोई फिक्स कांस्टेंट है. दिस इज द पैरामीटर 2 3 5 6 दिस इज नॉट वेरिएबल. ये शुन वेरिएबल छ y तो x यस मतलब वेरिएबल छ क्या y तो x लेकिन m शुन वेरिएबल के बट अस हेको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m थाज नजर वन ये कत नीर बराबर ये दियो नजर ये कत नीर बराबर ये नीर बराबर 2m डिवाइड बाय 1 plus m स्क्वायर वही में लोग लिमिट कुने लिमिट में कैसे आते अप्लाई वही कैसे हेकने x वेरिएबल इन दैट्स व्हाई लिमिट शुन कोई काम ही होती. सो तेल क्या ये नीर बराबर कत नीर बराबर 2m डिवाइड बाय 1 plus and finally पूछू ये कस पे रूट डिपेंडेंट ms पेडन it gives different values for different values of m ये ms अलग अलग values मो 1 कांदी 2 कांदी 3 कांदी 4 लेकिन अगर इस अलग अलग वैल्यू ms दिम होता है कि नेरन अलग अलग वैल्यूज नेरन डिस्टिंक्टिव वैल्यूज नेरन गो अमुक मतलब गो m दितना अकोई वैल्यू मगर मैं ये गोस along different paths गो सेम वैल्यू दिन मगर m दितना कहीं so what we can say its limit does not exist. it depends on as therefore limit simultaneous limit you can say it limit does not exist. Limit should exist gasa reason as what is the reason as it depends as it gives different values for different values of m m. समझ आया simultaneous limit? How can we find out the simultaneous limit?
समझ आवा Yes, sir. But تیٚلہِ چھُنہ ہمیشہِ ما چھِ تیٚلہِ لِمِٹ گژھٲنی ایٚگزِسٹ ییٚلہِ تہِ M چھِ أسۍ نِوان. So what we can do, Mr. Ghulam Muhammad? I think that it is your network issue, but Isha sir chai gasan problem. Awas mein nahi wa kya? ٹھیٖک یِوان So ٹھیٖک چھُ. Irfan excuse no. الطاف Altaf awas break gasan mein. No sir ठीक आ रही है. अच्छा तो ठीक है. جی ایم چھُنہ یِوان سیوٚد جی ایم No, तुम switch बिचौर message करा. چھِ گژھان We can do. So, but lecture is recording, so I will upload on my YouTube channel. Don't worry. Okay. समझ आया? इजाज़ आप पूछ सकते हो. What is your question? Sir بہٕ اوسُس وَنان ییٚلہِ تہِ چھِنہ نِوان یہِ taking y is equal to M into sometimes. Yes. تیٚلہِ مےٚ چھُنہ پرٛٮ۪تھ وِزِ sir limit gژھٲنی ایٚگزِسٹ. No, press ییٚلہِ تہِ M یی. You will see now. मतलब आप आगे जाके देखिए. हमें examples करने हैं उसको. Don't worry. فِکسڈ ویلیو نہیں ہے نا کہاں 0 0 نہیں 2 Don't worry. मतलब हमें examples देखने हैं ना बहुत सारे examples. M چھِنہ پَتہٕ یہِ چھِ پانے value تراوان. हाँ मतलब which No. आप सुनिए Mr. Ejaz. You will see. मतलब हमें बहुत सारे examples करने हैं उसके ऊपर कि M तो रहेगा ही नहीं वहाँ. ठीक है ना? ٹھیٖک چھُ. वो मतलब उन चीज स्टार्ट गसान उन चीज मतलब ओप चोप करन अत मुतलिकन पता नहीं तेजान पाने. Now we will find हमें अब क्या निकालना है. We will find repeated limits. So limit x comma y approach 0 0. This is what 2xy square divided by x square plus y raised to power 4 can be written down as limit. You know that जो कि मैंने already definition लिखवाया. मैं इस तरीके से अब find out करना है. Y approach to 0 2xy square divided by x square plus y raised to power 4. Now this is equal to limit x approach to 0. It means that you have to apply. आपको क्या करना है? Y को आप approach करना है 0 की तरफ. ठीक है? ठीक कर लो. तो क्या आएगा? 2x को आपको अप्लाई नहीं करना है. पहले आपको ये इवैल्यूएट करना है. Into 0 square divided by x square plus 0 square. What you will get? Limit x approach to 0 divided by x square. That's equal to limit x approach to 0 0. So what is it? 0. समझ आया? एक्चुअली अप्लाई कर रहा हूं नहीं, तब तक हमें ये अप्लाई नहीं करना है. पहले हमें कंप्लीटली ये सॉल्व करना है. वायु सर हाँ, सिंपल है कि नहीं? इजाज़ चलिए मलाल यस है. सर ठीक छै. ओके ठीक है. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? लिमिट x comma y approach to 0 comma 0 2xy square divided by x square plus y raised to power 4. This is equal to limit y approach to 0. Limit x approach to 0. आया समझ? समझ आया कि नहीं? मैं को ना पाने प्लेस चेंज. हाँ. So this is equal to limit y approach to 0. What we will get? 2x को वैल्यू डालना है. So let us see. Limit y approach to 0. 0 divided by y raised to power 4. Limit y approach to 0. 0, that is 0. This is what we call iterated limits. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट जो आपको समझ नहीं आया?
फाजिल, आप मुझे बोलिए, जी सर। एनी डाउट? नो सर। ओके। अल्ताफ हुसैन, मिस्टर अल्ताफ हुसैन, क्या आपको कोई समझ आया कि नहीं? हाँ सर ठीक है। एंड यूनुस, ठीक है सर। एंड इरफान आज नहीं आया। ऑनलाइन क्लास बंक मारा मुझे, तुम क्या दगे ना मुझ ना नहीं ऑनलाइन क्लास बंक पे मारो ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सेम टू सेम simultaneous and repeated limits. Function is this: f of x comma y is equal to, Als we het laagst leggen, limit exists on repeated limit. no, simply find out and nothing else. आपको फाइंड करना है। Yes, sir. Repeated limit go not exist, simultaneous limit go not exist कहीं। हाँ वो तो फाइनाइट है, यस, जीरो है, दैट्स एग्जिस्ट। जरूरी है। किसने बताया? देखो ना, चलो छो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। अगर क्वेश्चन ने पूछा है एग्जिस्ट्स और नॉट, तो आपको लिखना है एग्जिस्ट्स बाद में, ठीक है? दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मिस्टेक ये? So कहाँ के वनान फल सब्दुत में एस के किस पोर्ट लेखुन, मतलब अख Yes, sir. पैटर्न वी हैव फर्स्ट टू फाइंड, सो लिखितो है पाने मॉडिफिकेशन का एम्पोस है पाने स्माइट सरसी क्वेश्चन में लेखुन है, तो बचन तुम्हें सेकंड किया मैं लिख डायरेक्टली। हाँ, वी हैव f Yes, sir. y choice x cube y cube divided by x minus 4, x comma y is not equal to 0 comma 0, and this is 0, x comma y equal to 0 comma 0. First you have to substitute directly limit. तो yes. अगर हम डायरेक्टली लिमिट डालेंगे तो क्या होगा? 0 0 0 0, दैट इज 0 by 0, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्या इवॉल्वेशन पॉसिबल है, सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब, वी नो दैट a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है? वही याद छुआ? फॉर्मूला तो मुश्किल गो तक क्यों गुम छुआ याद ये फॉर्मूला? सर ये छा आसान किन बदल क्या आसान? First you need to check क्या simplification possible है कि नहीं। First you have to, this and this will go cancel, क्यों cancel होगा? क्या ये हमेशा के लिए possible है? नो सर क्यों अब possible बना, क्यों possible बना? नहीं, मेरे ट्रस्ट डिनोमिनेटर ट्रस्ट मानती। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे सपोज दिस इज 0, दिस इज आल्सो 0, क्या ये मुमकिन है वो कैन कट आउट? हाँ मुझे समझाओ, जल्दी समझाओ मुझे। ये इसने सिखाया मुझे, क्योंकि ये शो ना वाई अप्रोच करना 0 कुन, अमिक मतलब वो अगर एक्सेस तो 0 करो ना पन डिफरेंस सो ग्रेटर देन 0 जरूरी, वायस तो 0 करो ना मॉडल डिफरेंस सो ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, समझो मेन बात। वो तो पॉसिबल तभी जाके बनेगा ये कंडीशन है, अगर x है ना बराबर 0 y है बराबर 0, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कौन इस कैंसिल समझ आवा? समझ आवा कि ना? सर क्या बचो इस फाइनली? Now this is one के ये पे ना along the path करूँ check के अमिक लिमिट छा exist गसान किन की ना क्या आज कौन सा करो देखे? ऐसे बना simplification simple बनाओ, मतलब तेरे को therefore limit x y
approach to 0 comma 0 you should always can't even sir yes always no वहाँ के simplify कर ऐसी function ही कथा बराबर या x square plus xy plus y square सो कत नेर बराबर x ति 0 y ति 0 तत क्या नेर 0 ना x ति approach करना 0 कुन y ति कुन करा approach 0 कुन and f of 0 comma 0 कछ बराबर ये x comma y बराबर 0 0 comma 0 तम क्या फंक्शन देवा आउटपुट 0 तमिक मतलब क्या गो लिमिट ऑफ समझ आओ मेन कत यानी कि इधर सेम लिमिट ऑफ द फंक्शन द्रा बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन फैक्ट वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस hence we can say that limit exists limit of वैसे को नहीं बाय पाथ चालू करे हाँ कर लो कोई भी पाथ चलो उससे भी हम कर लेंगे तम से कुछ कह रहे कैसे लिमिट ये तौर बताए बकर along the path कर बच्चा वाह सर इजाज़त से मगलो था Yes, sir. दिल कर बराबर यूनुस जुम्मे मस्ती का समय Yes, sir. okay along the path ते करो इल्तक शक शुभ आसान मतलब ये हिकना possible now check एक क्या मुमकिन छाकिन की along the path मतलब बुश तक तरीक वना हर एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहता गोडनेस क्या चेक करो तम पत क्या चेक करो तम पत क्या करो तम पत ये मेरा मकसद है कि आपको हर एक पॉइंट समझ आना चाहिए बस see let's taking y is equal to mx ठीक यहाँ पे पॉसिबल है what we will get f of x comma y first we check ये किसके बराबर आएगा x cube minus m cube x cube divided by x minus mx isn't it कि नहीं समझ आया what you will get x cube तो कॉमन आएगा 1 minus m cube divided by x तो कॉमन आएगा 1 minus m एक तो कैंसिल होगा तो वहां पे क्या रहेगा x square into 1 minus m cube divided by 1 minus m now therefore limit x comma y approach to 0 comma 0 x cube minus y cube divided by x minus 1 किसके बराबर आया limit x approach to 0 after solving this we will get हमने क्या obtain किया ये वाला तो वहां पे क्या है x square minus 1 minus m square divided by 1 minus m x को approach 0 कर लो तो क्या आएगा 0 मिस्टर एजाज अब यहाँ पे m रहा कि नहीं No, sir. तो hence limit exists at equal to 0 its also output is 0 and if you approach along any way this also output is chalo by the way आपने along the straight line लिया along the straight line ले लिया taking x is equal to r cos theta y is equal to r sin theta this is along the circle ठीक अब ले लो क्या आएगा f of x comma y किसके बराबर आएगा और x की जगह r square cos square theta minus r square sin square theta divided by what you will get r cos theta minus r sin theta as x approach to 0 or also approach to 0 y approach to 0 or approach to 0 so in both ways we are getting or approach to 0 so simplify it first so r times cos square minus sin square theta divided by cos theta minus sin theta and what you will get after simplification you are getting this now आपको क्या करना है limit x comma y approach to 0 comma 0 f of x comma y this is equal to limit and now there is new variable or approach to 0 you can find out how r approach to 0 as this
एफ ऑफ एक्स कमा वाई किसके बराबर है? सो किसके बराबर है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन? और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अप्रोच कर लो तो जीरो आएगा, आर की जगह आपको जीरो डालना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ आया? Yes, sir. Along every path its limit, Exists. so वो तो मुझे लगता है वो आएगा। इटरेटेड लिमिट्स है, रिपीटेड लिमिट्स, वो तो सिंपल है, वो तो आपको आएगा, दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। Is there any doubt or not? Tell me quickly. ठीक है सर। डाउट मत है आपको? डाउट? No, sir. Okay, next question. See what is question. F of x comma y is equal to y divided by x plus y. X comma y is not equal to 0 comma 0, and so when x comma y is equal to 0 comma 0. So find its limits, iterated and also simultaneous. So यहाँ पे आप y is equal to mx भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो। डिनोमिनेटर में वेरिएबल खत्म होगा तो क्या आएगा? y is equal to mx. What we will get? f of x comma mx किसके बराबर आएगा? x minus mx divided by x plus mx, एंड सिंपली मतलब मॉडिफिकेशन करने का मतलब वो तो आपके हाथ में है, लो छोड़ दो, मैं सिंपल कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको। 1 minus m divided by 1 plus x will go cancel, तो ये डिपेंडेंट रहेगा m पे, so its limit does not exist. समझ आया? समझ आया? मैंने डायरेक्टली आप किया, मॉडिफिकेशन आपके हाथ में है। जल्दी मुझे बोलो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर एक और बार रिपीट कीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट, आपके पास फंक्शन किसके बराबर है? x minus y divided by x plus y. So you have to check its limit exists or not at the origin. 0 x comma y is equal to 0 comma 0. So आपको मैंने बताया कि हम यहाँ पे along the straight line जा सकते हैं मतलब origin की तरफ, taking y is equal to mx. So what we will get? आपको y की जगह आपको mx डालना है। f of x comma mx किसके बराबर आएगा? x minus mx divided by x plus mx. X comma mx is not equal to 0 comma 0, and 0 x comma mx is equal to 0 comma 0. This is converted now in single variable. So more simplification you can do it. x कॉमन तो आएगा, 1 minus m रहेगा, नीचे भी क्या आएगा कॉमन? x, तो क्या रहेगा? 1 plus m. तो वही x comma m is not equal to 0 comma 0. So 0 comma mx is equal to 0 comma 0. So x and x will go cancel, तो क्या रहेगा? 1 minus m divided by 1 plus m. कब? x comma mx equal to 0 comma 0, 0 x comma mx is equal to 0 comma 0. So what we will get if we take different values of m, we will get different values there. लेकिन वैल्यू क्या आना चाहिए? 0. लेकिन अगर इस m बस अलग अलग वैल्यू त्राओ, कहाँ त्राई फॉर एग्जांपल 1 that is 0, कहाँ वरना बताओ 2 that can 1 minus 2 divided by 1 plus 2, तो क्या आएगा आंसर? -1 divided by 3. लेकिन -1 by 3 is not equal to 0, so its limit does not exist. फिर से रिपीट करना है तो मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर समझ आया। Okay, thank you.
तो मुझे थोड़ा काम है. I will start from tomorrow, continuity of a function. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Thank you.